बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाइपोल को पढ़ा। डाइपोल क्या था? इट इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों आज हमने करना क्या है? आज हमने उस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन of an electric dipole. Let me consider an electric dipole. तो बच्चों ये हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर रहे हैं। ये चार्ज माइनस क्यू और यहां पर चार्ज प्लस क्यू। दिस इज बी एंड ए। दिस इज द पॉइंट ओ। दिस डिस्टेंस स्मॉल ए, small a. Let me consider a point P on the axial line. A unit positive charge is present or kept at point P. Let this distance be r from point O. बच्चे यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? P पॉइंट का r प्लस ए। बेटे देखो ये तो आपका r हो गया और ये a, तो r प्लस ए और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस ए। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देखो हमने करना क्या है, एक बार तो हम माइनस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे और एक बार निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से। फिर हम एक नेट फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे पी पॉइंट। अब देखो बेटे ये कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। फील्ड कहां होगी? टूवर्ड्स द चार्ज, इनवर्स। दिस इज E1, E1, and due to positive charge it is E2, outward from the charge. तो बच्चे पहले हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो E1 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे डिस्टेंस चेक करो, B से P तक का डिस्टेंस हमने लेना है, तो BP स्क्वायर अलोंग द डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन लेंगे हम? P टू B अलोंग PB। फर्स्ट इक्वेशन। और हम ये BP की जो वैल्यू है, आपने जो BP की वैल्यू निकाली है, BP क्या है? R प्लस ए और AP क्या है? R माइनस ए। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए होल स्क्वायर अलोंग PB। This is your first equation. Similarly, electric field intensity
at P due to plus Q charge. तो बच्चे ये आ गया हमारे पास E2 that is equal to Q upon 4 pi epsilon distance R minus A whole square. पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या जाएगा बेटे अलोंग एपी, अलोंग एपी। अब बच्चे देखिए ये डायरेक्शन किसकी है E1 की, ये डायरेक्शन किसकी है E2 की, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे नेट रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट P। बच्चे E1 और E2 में से मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, E1 का या E2 का। तो बच्चे देखिए आप यहां पर आइए, डिनोमिनेटर में क्या है R प्लस ए, यहां पर क्या है R माइनस ए, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड E2 का ज्यादा है। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी इक्वल टू E2 माइनस E1। अब बच्चे डायरेक्शन क्या होगी इस नेट फील्ड की along the field which is greater, डायरेक्शन ये रही। तो इक्वल टू E2 माइनस E1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A और स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A होल स्क्वायर। तो बच्चे इसे सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे किया जाएगा, कॉमन उठा लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए। तो 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। तो बच्चे देखो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह आ जाएगा R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर एंड दिस वन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चे देखो जब आप एलसीएम लोगे R माइनस A मल्टीप्लाई बाई R प्लस A दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस कम्स आउट टू बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। कैंसल आउट। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया इक्वल टू Q इंटू 4RA, 4RA कैन बी रिटन एज 2A इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। This Q into 2A, this is called the dipole moment, electric dipole moment P. This can be written as 2PR upon 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. This is the electric field intensity at any point on the axial line due to an electric dipole. अब बच्चे देखिए
इसी चीज को अगर हम श्योर डाइपोल के लिए बात करें, श्योर डाइपोल के लिए आपकी जो आर की वैल्यू है, आर स्क्वेयर है, दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू ए स्क्वेयर. तो फॉर short dipole, r square much greater than a square. You can neglect value of a square with respect to r square. This comes to be E at axial line equal to 2pr upon 4 pi epsilon naught r power 4. कैंसल आउट. यहाँ पे क्या आ गया बेटे, आर क्यूब. तो ये आ गया आपके पास एक्सियल लाइन पे 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. राइट. नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. बच्चे पहली बात, ये आपकी डाइपोल, यहां पर चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी, यहां पर चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए. बच्चे देखो, अब इक्वेटोरियल लाइन को कैसे समझे, बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. कर दी. यहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. This is the point P on the equatorial line. Now, join this point, join this point A. This is small a, dipole length 2a. This is r, and this one side r square plus a square under root. Firstly, find the field intensity at point P due to minus q charge. Electric field intensity at point P due to minus q. Electric field intensity at P due to minus q. तो बच्चे क्या आएगा, E1 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस डिस्टेंस BP स्क्वायर. तो बच्चे BP क्या है, एक्चुअली BP आपने किया है कैलकुलेट, तो ये आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो AP, same one, under root r square plus a square along PB. ये देखिए डायरेक्शन क्या है, P टू B. तो A1 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट BP स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आल्सो AP स्क्वायर. तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये क्या जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस
A square along PB, along PB. Similarly, E2 equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square along AP produced. ये देखिए बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड होगी आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये हो गया आपका E2. लेट दिस एंगल बी थीटा. तो बच्चे इसका रिजल्टेंट E1 और E2 का रिजल्टेंट कहा जाएगा? सपोज हियर दिस एंगल बी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल बी थीटा आल्सो. तो बेटे E1 और E2 के बिटवीन कितना एंगल है? 2 थीटा. तो हम क्या निकालते हैं यहां पर? हमने क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at P equal to under root E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 2 theta. बेटे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, cos एंगल. फ्रॉम 1 and 2 E1 is equal to E2. तो बेटे यहां पर E2 की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है E1 को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E1 इंटू E1, दैट इज 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा. आपने क्या किया? E2 की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया E1. तो बच्चे यहां पर क्या आ गया आपके पास? 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर cos 2 theta. Now take this 2E1 square common. This comes to be 1 plus cos 2 theta. But 1 plus cos 2 theta, that is 2 cos square theta by 2. That means 2 cos square theta. It comes to be under root 2E1 square 2 cos square theta. बेटे सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 2E1 cos theta. Put value of E, this one. तो ये क्या आएगा बेटे हमारे पास? We get Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square into cos theta. Cos theta. From this triangle, this is base and this is hypotenuse. So cos theta, that is equal to A upon under root R square plus A square. That is equal to Q into 2A 4 pi epsilon naught R square plus A square power 3 by 2. This Q into 2A, that is dipole moment.
electric dipole moment 4 pi epsilon naught r square plus a square power 3 by 2. In vector form, if we take the direction equal to minus p, because the direction of electric dipole here, obviously it is in opposite direction to the electric field. It means 4 pi epsilon naught r square plus a square power 3 by 2. For a short dipole, for a short dipole, r square much greater than a square. Therefore, equal to E at equatorial line, that comes out to be P upon 4 pi epsilon naught r cube. देखिए यहां पर एक चीज और बता रखी है, आप अगर एक्सियल लाइन पे लेते पॉइंट, दैट इज आल्सो नोन एज एंड ऑन पोजीशन, and if the point is on the equatorial line, here this part, this is broad on side position. तो जब भी हम सोल्व करेंगे एक्सेल लाइन के ऊपर, अगर क्वेश्चन में आता है एंड ऑन पोजीशन के लिए, तो आपने एक्सेल लाइन करना है, और अगर आपके पास ब्रॉड ऑन साइड आता है तो आपने इक्वेटोरियल लाइन के लिए एक्सप्रेशन करना है. ठीक है बच्चे. तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चे देखो, अब हमने डाइपोल पढ़ लिया है, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया एक्सियल लाइन पे, किसी पॉइंट पे जो एक्सियल लाइन पे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली एट अ पॉइंट विच इज एट इक्वेटोरियल लाइन. अब अच्छे इफेक्ट देखना हमें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपन. बच्चे देखिए दो चीजें हैं, एक बात करते हैं फोर्स की और एक बात करते हैं टॉर्क की. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैव नो ट्रांसलेटरी मोशन. ये शो की इट हैव नो ट्रांसलेटरी. अगेन आपने और क्या प्रूव करना है, वहां पर डेरिवेशन आती है कि डिराइव करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, और डिस्कस करनी है कंडीशंस फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. लेट मी स्टार्ट द टॉपिक. कंसीडर an electric dipole is placed in a uniform electric field. This is the representation for a uniform field. Parallel lines. This is your electric dipole. This is a point A where plus Q charge is there. At point B, minus Q charge. This dipole is inclined at an angle theta with the direction of electric field. This is 2A dipole length. Now, the force acting at this point A, that is plus QE, along the direction of electric field. At this point,
The force acting is minus QE in the direction opposite to the direction of electric field. What is the net force acting on this dipole? This is plus Q, this is minus Q, and the net force is 0. If the body experience a zero net force, it have no translatory motion. तो बेटे हमारी पहली चीज यही थी कि हमें ये शो करना है कि आपका मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं। तो सबसे पहले बात नेट फोर्स, या सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स एक्टिंग एट ए, दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, force acting at B, that is equal to minus QE. Net force acting on the electric dipole, that is equal to plus QE plus minus QE, which is equal to 0. Hence, the dipole have no translatory motion. बच्चे एक बात हुई, कंप्लीट कर लिया। सेकेंड, टॉर्क। फिर क्या इसमें डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, tau equal to, what is torque? Magnitude of either force into perpendicular distance तो बच्चे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE और माइनस Q, मैग्नीट्यूड क्या बेटे QE into perpendicular distance, this is the perpendicular distance AN, suppose AN, in triangle ANB, AN upon 2A, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is equal to sin theta. AN comes out to be 2A sin theta. Using the value of AN in equation number 1, therefore torque equal to QE into 2A sin theta. Now equal to Q into 2A E sin theta. This Q into 2A, that is the dipole moment, PE sin theta. In vector form, it can be written as
tau equal to P cross E. Theta is the angle between the direction of dipole moment and electric field intensity. Special cases. If theta equal to 0, it means the direction of dipole moment and electric field intensity is same. That means dipole moment is along the direction of electric field. If theta equal to 0, tau equal to Pe sin 0, tau equal to 0. This is the condition for stable equilibrium. Stable equilibrium. Second point, if theta equal to 180, again tau equal to 0. क्योंकि बेटा अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा, सॉरी 180 होगा, तो टाउ क्या हो जाएगा पी ई साइन 180, साइन 180 अगेन 0, तो आपके पास टाउ क्या आ गया 0. दिस इज द कंडीशन फॉर this is the condition for unstable equilibrium. Unstable equilibrium. And third one, if theta equal to 90, if theta equal to 90, P is perpendicular to direction of electric field. Dipole moment perpendicular to direction of electric field. Therefore, torque equal to Pe sin 90. Torque equal to P. And this is maximum one. तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये सबसे पहले शो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0. दैट इज द डाइपोल हैव नो ट्रांसलेटरी मोशन when placed in the uniform electric field. Second one, derive the expression for torque and discuss the condition for stable and unstable equilibrium. अब बच्चे देखो, यहां पर हमने ये बात कही कि भाई टॉर्क एक्ट कर रही है डाइपोल. अगर टॉर्क एक्ट कर रही है तो वो डाइपोल को रोटेट करे, घुमाएगी. ठीक है बच्चों, वो क्या करेंगे? रोटेट करेंगे. इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करते हैं. बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क. अगर टॉर्क एक्ट कर रही है तो भाई इसका मतलब क्या है? वो डाइपोल को रोटेट करेगी, घुमाएगी, रोटेट करेगी. ये डाइपोल है, अगर इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी ये इसे घुमाएगी. तो बच्चे अब हमने क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल due to virtue of its position in the uniform electric field. Now, when electric dipole is placed in a uniform electric field,
बच्चे भी पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तो उसके ऊपर क्या करेगी, टॉर्क एक्ट करेगी। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, it experiences torque. Therefore, tau equal to Pe sin theta. Small amount of work done in rotating the dipole through small angle d theta, small angle d theta। देखो, अगर डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करती है तो डाइपोल क्या करेगी, रोटेट करेगी। दैट मीन्स अगर स्मॉल एंगल से भी आपको डाइपोल को रोटेट करना है, some work has to be done by the field। तो dw इक्वल टू टाउ टी थीटा। बट देखो, लीनियर मोशन में क्या है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन अब रोटेशनल मोशन की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी थीटा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। फोर्स रिप्लेसेस द टॉर्क। तो dw इक्वल टू पीई साइन थीटा, फिर टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ये टी थीटा। तो नेट वर्क डन in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. This is the initial angle and theta 2 is the final angle. Work done that is equal to, integrate कर दीजिए, Pe integration theta 1 to theta 2 sin theta d theta। So W comes out to be Pe integration for sin theta, that is minus cos theta, limit theta 1 to theta 2। W comes out to be minus Pe, बच्चे क्या आ जाएगा, cos theta upper limit lower limit theta 1 to theta 2। W comes out to be minus Pe cos theta 2 minus cos theta 1। This work done is equal to the potential energy stored in the electric dipole। This is the potential energy stored in the dipole। अब इसे देखिए, इसमें दो अलग अलग केस बन सकते हैं, स्पेशल केसेस। नंबर वन, if initially the dipole is along the direction of electric field, if initially the dipole is placed along the electric field, that means theta equal to 0, theta 1 0, let it is suppose that theta 2 equal to theta। सपोज वैल्यू पुट कीजिए तो u इक्वल टू माइनस पीई cos theta minus cos 0, that is equal to 1। Potential energy comes out to be this। Second case,
If initially the dipole is placed perpendicular to the direction of electric field. If initially the dipole is placed perpendicular to the direction of electric field, that means theta 1 equal to 90 and theta 2 comes out to be theta. Therefore, u equal to minus PE cos theta minus cos 90 and cos 90 comes out to be 0. बच्चे 0 हो गया तो आपके पास क्या आ गया u इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा और u इक्वल टू माइनस p डॉट e. The dot product of two vectors is always their scalar quantity. तो बच्चे क्या हुआ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच.